तो आज आगे अब 11 चैप्टर में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देयर आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आइंस्टाइन्स explanation. Okay, so Planck had suggested that emission of the light is in the form of photon, but propagation and absorption are in the form of wave. ये तो क्लियर था कि हमने फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी पढ़ा, तो उससे हमने ये कंक्लूड किया था कि इन दिस फिनोमेनन नेचर ऑफ लाइट इज नॉट फोटोन, अरे नॉट वेव, तो कुछ अलग सोचना ही था। तो इसलिए आइंस्टाइन ने प्लांक ने जो थियरी दी थी उससे उसने और जनरल बनाया। प्लांक ने क्या बोला, प्रोपोगेशन एमिशन फोटोन के फॉर्म में होता है, प्रोपोगेशन एंड एब्जॉर्प्शन वेव के फॉर्म में, बराबर। बट आइंस्टाइन suggested that emission, propagation and absorption are in the form of photon. Okay, he suggested that during interaction between photon and electron, if photon has sufficient energy, then and then electron will absorb the photon. Okay, with this assumption he could explain the instantaneous emission, because if photon has sufficient energy, then and then electron will absorb the photon, otherwise electron will not absorb the photon. Okay, so if electron absorb the photon, it receives all the required energy, and so instantaneous emission is possible. Thus he could
explain the instantaneous emission of electron। तो एक important result उसने explain कर दिया मेरा ना। If frequency is less than threshold frequency, then photon does not have sufficient energy, so photoelectric effect does not take place। तो when frequency is less than threshold frequency, photoelectric effect does not take place। Why? This is the answer। According to Einstein's explanation, when your frequency is less than threshold frequency, in that case photon does not have sufficient energy, so electron will not absorb the photon, and that is why photoelectric effect does not take place। Then if f is greater than f naught, यानी frequency threshold frequency से ज़्यादा है, तो क्या होता है? Then electron absorbs the photon and receive the energy HF. It spends energy equals to its binding energy and remaining energy is its kinetic energy। ठीक है। If the frequency is greater than threshold frequency, in that case you will find, because photon has sufficient energy, so electron will absorb the photon, so electron receives HF energy, that is the energy of photon। Now out of this HF energy, it spends energy equal to its binding energy, and remaining energy is there with it in the form of kinetic energy। Okay, now according to definition of, listen, according to definition of work function is the minimum energy required for emission of electron। Okay, so definitely work function is the minimum binding energy, so for that electron which has binding energy equal to work function, okay, so this electron will spend minimum energy for emission, and thus it will have maximum kinetic energy। Clear? So electron which has binding energy equals to work function has minimum binding energy, so this
electron will have maximum kinetic energy. Okay, so this electron will have maximum kinetic energy. So for this electron, kinetic energy is HF is the energy it receives. Out of HF, phi naught is the energy it has to spend for emission. So this is the maximum kinetic energy. But we know that maximum kinetic energy of electron is V naught E, where V naught E is the stopping potential. So V naught E is HF minus phi naught. So from this result it is clear. Thus from above result he could explain that stopping potential depends on frequency and does not depend on इंटेंसिटी. बराबर, तो इससे क्लियर है आइंस्टाइन ये जो बराबर फॉर्मूला डिराइव की, इससे ये भी क्लियर है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर नहीं. तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी. बराबर, अब इसे मैं ई से डिवाइड कर दूं, बराबर, या फिर और ये आपको पता है वर्क फंक्शन को आप एच एफ नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अगर मैं इसे वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के प्लॉट, तो ये होगा माइनस एच एफ नॉट बाई ई, ये एफ, यहाँ पर आपको स्लोप मिलेगा एच बाई ई. ठीक है, तो आपको जो एक्सपेरिमेंटली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो एक्सपेरिमेंटल रिलेशन था कि ये लीनियर रिलेशन है और स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मैटर यूज्ड, तो वो भी इससे क्लियर हो गया. बराबर, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट लीनियर है, उसका स्लोप h बाई ई है. सो दिस स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन, वो कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं. देन द लास्ट पॉइंट इज अबाउट इंटेंसिटी. बराबर, तो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो रिलेशन था वो, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, सपोज उसने इंटेंसिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, I is equal to NHF, where N is number of photons emitted from unit area in unit time interval. ओके, तो इससे क्लियर है कि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन, अब मुझे लक्षण यहाँ एन भी वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी भी वेरिएबल है, बट
सेम फ्रीक्वेंसी की मुझे ब्राइट लाइट भी मिलती है, सेम फ्रीक्वेंसी की मुझे डल लाइट भी मिलती है, बराबर। तो इससे ये क्लियर हुआ कि फ्रीक्वेंसी अगर सिर्फ इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, बराबर। तो इससे ये क्लियर है कि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एन। तो अगर अब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे और इससे आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन किया, बराबर। तो दस larger the intensity means large number of photons. So large number of electrons are emitted, and as a result we get large current. So in this way Einstein could explain each and every experimental result about photoelectric effect. Okay, ये क्लियर था कि in this phenomenon nature of light is not wave. तो उसने आइंस्टाइन ने जो प्लैंक ने जो सजेस्ट किया था उसे और जनरल बनाया कि not only emission but propagation and absorption are also in the form of photon. Okay, he suggested that when light is incident on the metal surface, so during this interaction, if the photon has sufficient energy, then electron will absorb the photon, otherwise electron will not absorb the photon, and thus photoelectric effect will not take place. So if photon has sufficient energy, in that case you will get instantaneous emission. Thus he could explain instantaneous emission. When frequency is less than threshold frequency, means photon does not have sufficient energy, and as a result photoelectric effect does not take place. If the frequency is greater than threshold frequency, in that case photon is absorbed. So electron receives energy HF. From this energy HF, it has to spend energy equals to its binding energy, and remaining energy is there with it in the form of kinetic energy. Now electron which has binding energy equal to its bar function has minimum binding energy, so this electron has to spend minimum energy for emission, and so it will have maximum kinetic energy. So maximum kinetic energy, तो मिली थी कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को HF, उसने यूज कितनी, स्पेंड कितनी की, वर्क फंक्शन जितनी, बराबर. बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज V naught E. Okay, so this is the relation between stopping potential and frequency. So from this relation it is clear that stopping potential depends on frequency, it does not depend on intensity. अब अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो ये जो मुझे रिलेशन मिला, ये इससे क्लियर है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी हैज लीनियर रिलेशन, बराबर. तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो भी एक्सप्लेन हो गया. यहाँ आपको स्लोप h/e मिल रहा है विच इज कांस्टेंट. फिर आइंस्टाइन ने बताया कि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इंटरवल. तो ज़्यादा इंटेंसिटी है यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ज़्यादा है, तो ज़्यादा फोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के एमिट करेंगे, इसलिए आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा मिलेगा. Thus he could explain the relation between photoelectric current and intensity of light. Okay, ध्यान से रीड कर लो. Next question, characteristics of photon. So from the phenomenon like photoelectric effect, Compton effect, we can discuss some important characteristics of photon.
Okay. So first, photon is real particle like other matter particle. बराबर, जैसे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इस तरह से फोटोन भी एक रियल पार्टिकल है. ठीक है. सेकेंड, फोटोन हैज रेस्ट मास जीरो. फोटोन का रेस्ट मास जीरो है, यानी रेस्ट कंडीशन में फोटोन होता ही नहीं. थर्ड, फोटोन does not have electric charge. ठीक है. फोटोन does not have electric charge. Fourth, photon does not suffer deviation in electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में फोटोन का डेविएशन नहीं होता है. ओके. फिफ्थ पॉइंट, लिसन. if the frequency of the photon is f, then energy of the photon is hf and if the frequency of the photon is f, then energy of the photon is hf and momentum of the photon is hf by c, यानी hf, c is आपको पता है lambda f, so it is h by lambda also. Sixth, mass of photon is hf by c square. बराबर, मास उसका hf by c square. अगर मैं मोमेंटम hf by c है तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. बराबर, तो वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज c, तो फिर ये c डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मास हो गया hf by c square. सेवेंथ, ड्यूरिंग collision of photon with other matter particles, law of conservation of linear momentum and law of conservation of energy are obeyed. Clear?
during collision of photon with other matter particle, law of conservation of linear momentum and law of conservation of energy are obeyed. तो ये है characteristics of photon, ध्यान से read कर लो. Okay. Then dual nature of light. So listen. Interference, diffraction, polarization, okay, etc. can be explained by wave nature of the light. So during interference, diffraction and polarization, during this phenomena, the nature of light is wave. Whereas photoelectric effect, quantum effect, radiation from perfect black body, etc. can be explained by photon nature of the light. ओके, तो ये जो फिनोमेना है इसे आप पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. whereas photoelectric effect, quantum effect, radiation from perfect black body ये आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. so thus we can conclude that the light has dual nature. कुछ phenomena में nature of light is wave, whereas in certain phenomena nature of light is photon, यानी particle. Thus we can conclude that light has dual nature. Okay, now we will discuss the Broglie hypothesis. Okay. So he suggested that dual nature of radiation is one part of certain universal law of the nature. Okay, he suggested that dual nature of radiation is one part of certain universal law of nature. So it is not the complete law, it is one part of the universal law. Okay, he argued that
matter and radiation are two entities of nature, and nature must be symmetric for both. Okay. He argued that matter and radiation are two mirror entities of nature, and nature must be symmetric for both entities. यानी अगर रेडिएशन को ड्यूअल नेचर है तो डेफिनेटली मैटर पार्टिकल को भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए. Thus matter particle should also have dual nature. So according to de Broglie, according to de Broglie, matter particle has wave nature also. Thus matter particle should have dual nature, यानी उसे मैटर पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसे वेव नेचर भी है. बराबर. He suggested that if the particle has momentum, mv, then the wavelength of its wave nature is equal to wavelength of the photon having same momentum. क्लियर. यानी हमें पता है कोई पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, mv. if the mass of the particle is m and velocity of the particle is v, तो उसका मोमेंटम है mv. बराबर. और अगर कोई फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है तो उसका मोमेंटम होगा h by लैम्बडा. तो दोनों के मोमेंटम सेम होंगे. सो लैम्बडा इज h by mv. बराबर. तो हियर लैम्बडा इज कॉल्ड de Broglie wavelength. ओके. de Broglie wavelength. फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ डिराइव करें तो लैम्बडा इज h by mv, but h by mv is linear momentum p. Now we know that p square by 2m is kinetic energy. ओके. तो इससे आपको मोमेंटम क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट में 2mk. तो thus lambda is h upon under root 2mk. Okay. If the electron या charge particle, if the charge particle is accelerated with पोटेंशियल डिफरेंस v, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, v की.
तो उस केस में आपका लैम्बडा होगा h/2mv3। क्लियर? तो de Broglie suggested that dual nature of the radiation is one part of certain universal law of nature. It is not the complete law, it is just one part of the law. He argued that matter and radiation are two entities of the nature, and so nature must be symmetric to both entities. Thus, if the radiation has dual nature, then matter particles should also have dual nature. Means matter particle बराबर should have wave nature also. बराबर अगर कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम mv है बराबर, और कोई फोटोन है जिसका मोमेंटम बराबर भी उस पार्टिकल की मोमेंटम जितना ही है, तो दोनों की वेवलेंथ भी सेम होगी। तो दस द ये जो वेवलेंथ ऑफ द मैटर पार्टिकल मिला वो है h/mv। दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। फिर हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के अलग अलग फॉर्म्स डिराइव किए। h/mv, mv is linear momentum, so h by p. This is the relation between kinetic energy and linear momentum. So p is √2mk. Okay, so lambda h/√2mk. If the charged particle is accelerated with potential difference v, तो फिर उसकी kinetic energy कितनी होगी? qv। बराबर, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है, ध्यान से पढ़ लो।